restarting our series of 11 AM from morning, द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, सो बीच में कुछ दिन का गैप हो गया था, फिर हम लोग 11 बजे सुबह में जो द हिंदू की एनालिसिस होती है वो हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल जस्ट राइट इन द कमेंट्स यस सर यू आर ऑडिबल, so that we can start our session. I'll be speaking both the languages, English as well as Hindi. तो मैं अंग्रेजी में भी बोलूंगा और हिंदी में भी बोलूंगा, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विद, बीच में कुछ दिन का गैप हो गया था, फिर हम लोग लेट्स स्टार्ट विद टुडे, एंड टुडे इज 26th September, right? Monday. So we are here with today's analysis of the Hindu. तो हम लोग जैसा कि पहले भी डिस्कस करा चुके हैं कि पॉलिटिकल आर्टिकल्स अवॉइड करना है। ओके, सो इफ यू हैव सीन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर, दीज टू वेयर प्राइमरीली अ पॉलिटिकल आर्टिकल। ठीक है, अगर आपने आज का द हिंदू अखबार पढ़ा होगा पहला पेज, तो उसमें जो ये दोनों आर्टिकल थी वो ज्यादातर जो थी वो पॉलिटिकल लीनियन की थी, इसीलिए इसको आप स्किप कर सकते हो। यू कुड हैव स्किप्ड दीज आर्टिकल्स फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। Let's move on to the second half of the first page of the Hindu. तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि सेकेंड हाफ जो इसके नीचे है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। So these are here the second half of the first page of the Hindu, and this one is a very important article. So the article says very premature to comment on India getting UNSC veto, says S. Jaishankar. So I hope you all are aware that Mr. Honorable S. Jaishankar is the Foreign Minister of India. ठीक है, भारत के विश्व फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब। उन्होंने ये कहा है कि ये प्री मैच्योर है, यानी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि इंडिया को यूएनएससी का वीटो मिल जाएगा। ओके, सो ही सेज दैट I think we are it is not correct right now to say कि we are getting UNSC veto very soon. Premature means it is very early to say this. बहुत पहले ही ये होगा ये कहना, यानी अभी वक्त लगेगा। It means he is sending a signal that it will take some time. I mean in the near future it is unlikely to get, but maybe in the future we can get. Okay, so that is what he is talking about. Now when he is saying that UNSC veto, so basically he is referring to what? जब वो UNSC veto की बात कर रहे हैं तो he is actually talking about what? Permanent seat in UN Security Council, right? है ना? Because those who are having permanent seat, those P5 nations, they have the power of veto. तो जब वो UNSC veto की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट सीट से रिलेटेड की P5 नेशन जैसे परमानेंट सीट है तो वो ऐसी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी उससे रिलेटेड बात करें। Whenever we talk about veto, we are talking about permanent seat in UN Security Council. Yes, Nancy Agnihotri, right? So that is what he says. External Affairs Minister S. Jaishankar, who concluded a week-long visit to United Nations, said it would be premature to comment on the positions countries including India are taking on the issue of whether any permanent membership for India to UN Security Council came with veto power. ठीक है, सो वही वो बता रहे हैं कि अभी थोड़ा जल्दी होगा ये कहना कि इंडिया और जो भी नेशंस जो डिमांड है यूएनसी वीटो का वो बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दैट। And further it says India has been campaigning hard for a permanent seat in UN Security Council and currently all P5 members have veto rights. तो यही इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आपको पता भी होगा कि UN Security Council में इंडिया का बहुत बड़ा डिमांड है काफी दिनों से कि हमको इसमें भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए करंटली जो है वो परमानेंट सीट 5 लोगों पे है, 5 कंट्रीज में है और उन 5 के पास वीटो पावर है। सो द आर्टिकल इज सेइंग दैट इंडिया हैज बीन डिमांडिंग एट द इंटरनेशनल लेवल टू गेट परमानेंट सीट in UN Security Council. Right now these permanent seats are only 5 to 5 nations and these 5 have veto power. This is what it is being discussed. Okay, yes, US, UK, Russia, China and France. Yes, Hariom Awad, right, you are talking correct. Now there is a question for you which is in front of you. Please read it and answer it. The question number 1 is United Nations has dash organs, so you have to tell me how many organs. So these are A, B, C, D. So please answer it in the live chat that United Nations has how many organs. Second thing is please answer it where is the headquarter of United Nations. Why I am saying so? Because recently our foreign minister has visited there. ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर
वहां गए यूएन के ऑफिस में, वहां विजिट किए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हेडक्वार्टर जो है वह कौन सी सिटी में है। सो प्लीज आंसर इट। पीपल आर सेइंग 6। ओ माय गॉड, हाँ यस यस सही, ठीक है। ए सम पीपल आर सेइंग 5 भी। देखो देयर इज अ कंफ्यूजन, सम आर सेइंग 7, ऐसा क्यों है? Yes, New York is the headquarter, right? See, United Nation has 6 principal organ. I am seeing some are saying 5, some are saying 7. ठीक है? I am not asking P5 nations. I am asking United Nation has how many organs? So it has 6 principal organ. ठीक है? And some people are answering about New York also. Yes, very good. It's not Washington DC. Some people have got confused. The headquarter of United Nation is not in Washington DC. It is in New York. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट। एंड सिंस आवर फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड इट एंड इफ यू आर फॉलोइंग दीज न्यूज यू कैड हैव इजीली आंसर्ड इट। तो ये पता होना चाहिए आपको, इट्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है, नॉट वॉशिंगटन डीसी। Now, so you can see these are the 6 principal organ of United Nation mentioned on the BYJU'S website also. You can go and read about it. UN General Assembly, Security Council, Secretariat, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice. So these are the 6 principal organ of United Nation. Okay. Now, when it was being talked about that, ye wali article bhi recently it was very much in the news that Russia backs India for permanent membership in UN Security Council. देखो, this is the news of 25th September, means yesterday, है ना, or day before yesterday. ये एक या 2 दिन पुरानी न्यूज है। Why? Because yes, India is having a good relationship with Russia. I hope you are aware. Since history also and right now also, we are still having a lot of new agreements and all. तो इंडिया और रशिया का जो मतलब रिश्ता है बहुत अच्छा है, राइट, एट इंटरनेशनल लेवल। सो दैट इज व्हाई रशिया हैज आल्सो सपोर्टेड इंडियाज डिमांड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यस, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो व्हिच इज हियर, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? 5, 15, 10, 8। व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर इट। गौर से पढ़ें फिर आंसर कीजिए। फ्रांस ऑल्सो बैक इंडिया, यस, हाँ, यस, व्हाट इज द राइट आंसर? प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर इट। यस, देवद्रिता हैज आंसर्ड इट, सोनल, गुड गुड गुड, यस, 15। देखो, दिस इज हाउ आई प्ले विद द नंबर्स। आई एम नॉट राइटिंग परमानेंट मेंबर्स। हैव आई रिटन की परमानेंट मेंबर्स? मेनी पीपल आर आंसरिंग 5 कि P5 है तो 5 होगा, नहीं, परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट। यस, मुस्कान गोयल हैज आंसर्ड इट परफेक्टली विद एक्सप्लेनेशन आल्सो। यस, दिस इज एक्चुअली P5 प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, है ना, ऐसा है ना। सो इफ यू सी द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 years एंड P5 यानी परमानेंट 5 members. That is why whenever I give you the question, the first thing I want to ensure is कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। So I am not asking the permanent members, I was asking how many members are there, so the answer should have been 15, right? That is what you should be knowing it. Okay, yes, there's a request, everyone please press the like button, share this video, subscribe to our channel, सबको like button press कर दो everyone. Yes, now if you see this an eruption of purple, ये तो छोटी सी थी तो मैं भी दिखा देता हूँ because it came in the news. तो this is a photo actually from Chikmagalur district of Karnataka. So these are this was in the Hindu, so just I am showing it. It's not important from your exam point of view. Now अब आगे चलते हैं. This was an article actually which was mentioned in the Hindu on the first page, second half. It says Dasara back in full on glory in the city of palaces. So whenever we are referring to city of palaces, which city we are talking about? Can anyone write in the live chat? City of palaces किसको कहते हैं? ये बताइए, कोई बता सकता है? So basically we are referring to Mysore. Mysore is one of the very famous city in Karnataka. तो कर्नाटक में एक शहर है मैसूर, उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो इन अ फर्स्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल लॉन्च 10-day सेलिब्रेशन, ठीक है। सो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो भी उसमें फेस्टिवल में शामिल होंगे, बल्कि लॉन्च करेंगे, है ना।
Yes, very good. Mysuru, good. The city of palaces is decked up as Mysuru's mark your 10-day event at the Sara is set to unfold on Monday, etc. and all. तो Monday से नहीं, आज से ये फेस्टिवल शुरू हो रहा है. Why it is being highlighted? Because for the past 2 years, I mean in 2020 and 2021, it got affected due to COVID-19 etc. and that is why this time it is bigger, brighter and grander. मतलब हुआ ये था कि पिछले 2 सालों से क्योंकि कोविड का वेव्स था, लॉकडाउन्स वगैरह थे, तो उतना अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ नहीं था. ओके, सो जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया, बहुत डिटेल नहीं जाना है. सो व्हाई दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मैसूरू? दशहरा मार्क्स द स्लेइंग ऑफ डेमन महिषासुरा बाय गॉडेस चामुंडेश्वरी एंड सिंबलाइजेस द ट्रम्प ऑफ गुड ओवर इविल. मतलब ये समझना है कि डेमन मतलब होता है शैतान, राइट? तो डेमन यानी शैतान को गॉडेश्वर चामुंडेश्वरी के द्वारा मतलब खत्म किया गया. उसी के लिए उसी बात की याद में इसको मनाया जाता है इस फेस्टिवल को. ठीक है, यानी गुड जो है वो एविल पर भारी पड़ गया है ना. दैट इज व्हाट ट्रम्प ऑफ गुड ओवर एविल, दैट इज व्हाट इट सेज. ओके, सो दिस इज बीइंग डिस्कस्ड. ठीक है, बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ओके, यस. नाउ इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, वी आर गोइंग टू द एडिटोरियल पेज. इफ यू सी द हिंदू न्यूज़पेपर नाउअडेज, दे हैव चेंज्ड देयर स्टाइल. ठीक है, जो ये था पहले दूसरे स्टाइल से लिखते थे. They used to give the author's name here, photo was here. You can say the outlay of the entire Hindu newspaper have got changed, I would say, है ना. So let's discuss about the very important article in editorial talking about soft power. देखो ये ना एक नया कॉन्सेप्ट है, मतलब रिसेंट ईयर्स में ज्यादा फेमस हुआ है. This soft power is a concept given by Joseph Nye. It's very famous, है ना. And in the recent years, it actually became very famous. So soft power, as American political scientist Joseph Nye said in 1980s, is a power of attraction through culture, political ideas and policies rather than coercion that military hard power exhibits. Look, actually क्या होता है, when you talk about international relations, there are actually 2 types of actually power. One is called as hard power and another is called as soft power. 2 तरह के पावर का जिक्र होता है, डिस्कशन होता है. ठीक है, हार्ड पावर इज जनरली विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री, पुलिस, ये इसका जो पावर होता है उसको हार्ड पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, नाउ व्हेन आई से सॉफ्ट पावर, इट एक्चुअली इज द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ मिलिट्री बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, जैसे कल्चर है ना, स्पोर्ट्स, सिनेमा एटसेट्रा. इसका भी दूसरों पर असर पड़ता है, राइट? These things also have impact. So a country can have impact on other people's country or other countries' people, not only by military but by these means also. एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के लोगों को मुतासिर कर सकता है, असर कर सकता है, सिर्फ मिलिट्री के जरिए नहीं, कल्चर, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ये सब के जरिए. Yes, that's called as soft power. Yes, good सृष्टि शर्मा. हाँ, so actually these are the new words actually being coined. तो जोसेफ नाई ने इसको coin किया है this word. So जैसे for example, so let me show you some of the example to make it more clear. So this is yoga, right? Let me write with some other pen. तो ये जो है ना, this is yoga. This is actually, sorry, this is actually a part of you can say soft power of India. तो ये influence ऐसा है कि let's say for example, if yoga is popularized, people of other country are also following it, right? So it's a impact. We are creating an impact on other people, right? That's called as soft power. Similarly, जैसे ये हमारे शाहरुख खान की फिल्म है. So it's a Bollywood. So the Bollywood, the films from India are not only seen in India but in other nations also. तो जो इंडिया के जो फिल्म है वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि बाहर भी देखा जाता है और इससे इंडिया के कल्चर का इंपैक्ट वहां भी जाता है. Similarly, we talk about sports. एक्चुअली स्पोर्ट्स की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज इन दिस आर्टिकल द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स ओनली. ठीक है, सो व्हेन द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट पावर, इट इज कंसंट्रेटिंग मोर ऑन ही और शी, द ऑथर इज कंसंट्रेटिंग मोर ऑन स्पोर्ट्स देन ऑन अदर एस्पेक्ट्स, ऑल्दो सॉफ्ट पावर हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक योगा, फिल्म, स्पोर्ट्स, है ना, अदर थिंग्स, कल्चर एंड ऑल. ठीक है, यस, ओके. नाउ अब देखो द ऑथर क्या कहते हैं. सो द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? सो द ऑथर सेज, लेट मी शो यू नाउ द आर्टिकल्स व्हाट ही हैज रिटन.
Soft power, as American political scientist Joseph Nye said, that it is power of attraction through culture, political ideas, etc. है ना, यानी power of attraction है culture से, political ideas से, etc. and all. ठीक है, इससे किसी country का soft power मजबूत होता है. So it can be said that golden period of Indian sports may have begun. The Tokyo Olympics, the Birmingham Commonwealth Games are example of good performance. Neeraj Chopra won gold medal last year, etc. and all. So basically he is talking about sports as a soft power. ठीक है ना, sports as a soft power की बात ज्यादा कर रहे हैं author. ठीक है, is it clear? Okay, that is what is being. The medals not only provide pride to every citizen but also demonstrate country's soft power on global stage and encourage working towards the status. तो ये बता रहे हैं कि अगर इंडिया का कोई, जैसे नीरज चोपड़ा है, अगर वो गोल्ड जीतते हैं तो वो इंडिया को तो गर्व देते ही हैं और बाहर में इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ाते हैं, राइट? So the author is saying that if Neeraj Chopra or any other person wins a gold medal or any other medal, it increases our pride as well as increases India's soft power at international level. Okay, until recently there has been no empirical evidence whether the performance at Olympics or other world championship improved soft power or not. Okay, अभी तक कोई empirical evidence नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि क्या ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस से सही में सॉफ्ट पावर बढ़ता है कि नहीं. ठीक है, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल वगैरह दिया है कि क्या ये सही है, माना जाए कि इससे सॉफ्ट पावर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, एटसेट्रा एंड ऑल. ठीक है, so that is what, although yes it is generally believed that cinema, sports, these are the things which impact soft power, of course, no doubt about it. ठीक है, so then he has used, China uses its superiority in elite sports to build people to people relations with other countries. For example, athletes from African countries such as Madagascar are trained in swimming, badminton, etc. in China, which helps Beijing create a positive impact on border population. देखो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है. So उन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि चाइना जो है पीपल टू पीपल रिलेशन बनाने में दूसरे कंट्री के स्पोर्ट्समैन को कैसे ट्रेनिंग देता है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इट इज सेइंग, द ऑथर इज सेइंग दैट चाइना is helping other nations sportsmen to train them so that it will increase people to people contact, especially talking about African nations like Madagascar, etc. So it is calling the people from those nations, training them so that they can say get more medals for Africa, and in turn the relationship between the common Chinese people and African people increase. That is what he is talking about. So the people to people contact, if it increases, it is a result of a rise in soft power. अगर दो मुल्क के बीच, लोगों के बीच बातचीत, मुलाकात अगर बढ़ रही है तो ये सॉफ्ट पावर का एक इम्पैक्ट है, राइट? है ना? That is what the author is talking about. Then he says India's medal tally in Tokyo Olympic Games 7 was its most decorated Olympic in Indian history. But there is no hiding fact that India has one of the world's poorest population to medal ratio. तो उन्होंने ये बोला कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हम लोगों ने 7 मेडल जीता, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इसमें कोई दो राय नहीं है पहले के मुकाबले, लेकिन तो भी अगर पॉपुलेशन टू मेडल रेशियो की बात करें तो सबसे खराब है. So the author is saying that though last year we had won the good amount of medal or the most amount of medal as compared to previous years, but still if we talk about population to medal ratio, means population divided by medal, so we are getting very less medal as compared to our population. So it is one of the least as compared to population. तो ये कह रहे हैं कि we need to increase this. तो हम लोग को इस चीज को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा, otherwise will not be able to create very strong soft power as far as sports is concerned. अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो स्पोर्ट्स से जो सॉफ्ट पावर आ रहा है उसको हम लोग बढ़ा नहीं पाएंगे. Yes, Sakshi, yes, right. Then the author further quotes about Niti Aayog report came up with a 20-point plan to improve India's Olympic performance, etc. The report said India still lacks a favorable atmosphere, etc. and all. तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने ये कहा था कि अभी भी फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं है ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके. ओके, अर्ली स्टेज एथलीट्स में बहुत सारे लोग हैं, उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड इन फैक्ट इन 2016. नीति आयोग रिपोर्ट आल्सो said the same. And then it is saying that a reply in parliament in 2018 said that we only spend 3 paise per day per capita on sports. In contrast, China spends 6.1 per day per capita, etc. देखो ये बात बहुत सीरियस है. हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत लेस है. देखो 3 पैसे पर डे पर कैपिटा यानी पर पर्सन. This is our expenditure in sports.
ओके, दैट इज व्हाट द ऑथर सेज। 3 पैसा हर दिन हर इंसान पर जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड खर्चा किया जाता है ना, जबकि चाइना में 6 रुपया 1 पैसा है उसके हिसाब से, 6 रुपया 10 पैसा है ना, 6.1, राइट। सो इट मींस वी आर स्टिल नॉट इन्वेस्टिंग मच इन स्पोर्ट्स। ये समझना है ना, नंबर नहीं याद रखना है, बट जस्ट हैव एन आइडिया that we are still spending very less on a sports, so we need to spend greater part of our GDP etc in sports। तो हम लोग को ज्यादा खर्चा करना होगा स्पोर्ट्स में ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। yes, हाँ। International Olympic Committee claimed that Tokyo Olympics Games was watched over by 3.0105 billion people, 74% increase in digital viewers from 2016 Rio। तो जो 2016 वाला जो ओलंपिक हुआ था उसके मुकाबले 2020 का ओलंपिक, जो कि 2021 में हुआ एक्चुअली, टोक्यो ओलंपिक्स को 74% ज्यादा लोगों ने डिजिटली देखा है ना, बिकॉज द राइज ऑफ यू कैन से मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट एटसेट्रा। सो द डिजिटल एक्सपेंशन वाज मच अहेड। तो देखो कि उससे बेनिफिट क्या होता है डिजिटल एक्सपेंशन से, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इफ इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म वेरी वेल, मान लीजिए कि इंडिया के बहुत सारे लोगों ने गोल्ड जीते, लेट्स से 10 पीपल वन गोल्ड, सो दिस विल बी वॉच्ड बाय इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसको देखेगी है ना, थ्रू डिजिटल वे है ना। मोस्टली वी वॉच थिंग्स, वेरी लेस पीपल गोज, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वॉच any sports or cricket by on phone, mobile phone, laptop etc. very few people go and attend that, you can say as an audience। so जो ज्यादातर लोग हैं पूरी दुनिया में जब देखेंगे कि अच्छा इंडिया से बहुत ज्यादा गोल्ड आ रहा है, तो फिर एक सॉफ्ट पावर अपने आप क्रिएट होता है कि why so many golds they are winning, so there must be something good and all। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, अभी we are not winning 10 golds, but still I'm just giving an example। so yes, so we'll be getting, if we are getting more medals, gold medals, it will create a positive impact at the international level, right, and increase our soft power। India should concentrate on forging MOUs with nations that excel in specific sports। the aim should be to train Indian players overseas etc and all। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि MOUs हम लोग साइन कर सकते हैं। MOUs means memorandum of understanding, so we can have agreement with foreign nations also, we can send our Indian players to foreign nations to get trained, ये भी कर सकते हैं है ना। कि जैसे एग्जांपल दिया कि ऑस्ट्रेलिया एंड यूके कैन हेल्प आवर कैन से आवर स्पोर्ट्समैन इन स्विमिंग एटसेट्रा, तो हो सकता है उन लोग का यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके की स्विमिंग अच्छी होगी तो हम लोग वहां भेज के उनको स्विमिंग की ट्रेनिंग करा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट ही इज बीइंग द ऑथर इज बीइंग टॉकिंग अबाउट। क्या ऐसा होता है कि दो कंट्री के बीच एग्रीमेंट हो, जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्री स्कॉलरशिप का एग्रीमेंट हुआ, तो यहाँ से इंडियंस जो है वो पढ़ने के लिए जाएंगे, तो जब इंडियंस पढ़ने के लिए जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियन स्पोर्ट्समैन जो है वहां स्किल लर्न करने के लिए भी जा सकते हैं, राइट। व्हेन एन इंडियन कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्री टू स्टडी, the Indian can also go for learning sports also, there's nothing wrong in it। so we can have such MOU, memorandum of understanding, means agreement with other nations to promote sports, है ना। so that is what it is being talked about। तो वही बता रहे हैं कि चाइना ने भी ऐसा स्कीम डेवलप किया, we have already discussed about these things, है ना। so that was basically, the author was talking about the soft power etc and all in terms of sports। now let's talk about this one, the ground plan for India's reformed multilateralism। okay, now let's talk Harsh V Pant is a very famous person, he writes an article etc on the Hindu। तो उन्होंने क्या बात किया है, let's start with it। India's foreign minister S Jaishankar visited USA from 18 to 28 September, है ना। for why, because we'll be having you can say 77th session of UN General Assembly got opened on 13 September। यानी 13 सितंबर को, यानी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ता पहले 77th सेशन यूएन जनरल असेंबली का हुआ। ओके, नाउ द ऑथर इज आल्सो टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली कंक्लूडेड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन समरकंद। सो आई होप यू ऑल आर अवेयर गाइस that recently on 15-16 September 2022 in Samarkand, Uzbekistan, SCO summit happened। so here is India, this is Uzbekistan, और यहाँ पे SCO है, Shanghai Cooperation Organization Summit happened। yes, you can see this is the picture and you can say India is also the part of SCO, you can see our Prime Minister is also here and there are others also like Chinese President, Russian President and other people also। so go and find out how many members are there in Shanghai Cooperation Organization, which one is the latest member etc and all।
When was it formed? इसको जाके पता कीजिए. Go and find out. Okay? Yes. So it happened on 15-16 September. मतलब recently 10-11 days back. 10-11 दिन पहले ये meeting हुई थी. Okay. Let's move on. Before that, there's a question for you. Read it carefully and then answer it. I hope you are aware that recently the 77th UN General Assembly session started. अभी recently क्या हुआ है कि yes, ईरान अभी recently add हुआ है. Good, good, good. Aditi, Hariom, Sharmishta, Harshita, Riya Verma, you all are right. Good. हाँ, form 2001, very good. तो Shanghai Cooperation Organization का latest member ईरान है. Good. What is the theme of 77th UN General Assembly session? इसलिए कि अभी just start हुआ है. We have discussed that UN General Assembly session has just started. You have to tell me what is its theme. I know that the options are very close, so I just want to know. So these are, let me write A, option B, option C, option D. What is the right answer? People are writing A. Very good. Yes. Ayush, Stuti, Shubham, Nancy, Rakhi, Sharmishtha, Hariom, Srishti, Neha, Riya Verma, you all are right. So watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. Okay. So this was an actually, it was mentioned in today's The Hindu also. You can see the author has discussed, here it is, that watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. Here it is. Yes. So that is what, let me show, remove myself and you can see. Here it is actually. You can say the author is talking about this. Okay. Now, UN Spotlight, the author is talking about the deadlock in UN Security Council resolution since war broke out, etc. Now, you have to understand one thing, and I had discussed previously also, these are the P5 nations, right? If one will say no, no means no. ये तो पता होगा आपको, है ना? If one will say no, no means no. So Russia is attacked Ukraine. So the UN Security Council came up with a resolution condemning Russia, but Russia vetoed it. ठीक है? तो जब वो ये कह रहे हैं कि deadlock है, उसका वजह क्या है? Because one of the party is the P5 member, so it will not allow anything to be passed against it. है ना? नहीं चाहेगा कि उनके खिलाफ कोई चीज पास हो. So that is why the author is talking about the deadlock in UN Security Council, right? Huh. Okay. Now, then the author is further talking about China's control of multilateral organizations, including UN, is only increasing. Most recently, in its unofficial presence, China exerted pressure, etc. देखो अब बताते हैं. When we are talking about multilateralism, multilateralism का मतलब क्या होता है? मतलब at global level where we have different countries as a member of any organization, like World Bank. So it is a result of multilateralism. United Nations, IMF, ठीक है? So it is saying that we are seeing the increased role of China. That is what author says. And it says we can see with unofficial pressure from China exerted on former UN Human Rights Chief Michelle Bachelet to stop release of a report on UN Human Rights Council on condition of Uyghurs in China. मतलब ये हुआ कि here is China. This is you can say Xinjiang province, and there is an allegation against China that Uyghur Muslims are being their human rights are being denied. तो उनके human rights को violate किया जा रहा है. That is the allegation. So उनके अगेंस्ट एक UN Human Rights Council की रिपोर्ट आने वाली थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चाइना ने प्रेशर डाला और वो रिपोर्ट को रोक दिया गया. That is what the author says. कि author says कि China has increased control on multilateral organization because it pressurized Michelle Bachelet, the former UN Human Rights Chief, not to come up with. So Michelle Bachelet was the Human Rights Chief till 31st August this year. ठीक है? अभी 31 अगस्त को रिटायर किए. ठीक है? So before that she was actually the UN Human Rights Chief. Now the new person has been appointed. Go and find out who is that new person. जाके पता कीजिए कौन नया है. ठीक है? So that is what the author is talking about, etc. and all. Then the author is again talking about that China, it मतलब यहाँ पे China blocked India-US proposal at UN to enlist Sajid Mir, a top Lashkar-e-Taiba commander operative involved in direct attacks in 2008 attacks. So ये कह रहे हैं कि China blocked it. China did not allow to be named Sajid Mir as the you can say to enlist Sajid Mir, a top LET commander, as global terrorist.
सो दिस वॉज ब्लॉक्ड बाई चाइना, इसको चाइना ने रोक दिया, इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया. सो दैट इज वॉट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. ओके, yes, you can see this article. Yes, I think it is 10 days back, है ना. This was an article which came. China blocks listing of Lashkar Commander Sajid Mir at UN Security Council. Why? Because again, UN Security Council, China has veto power. So even if one will say no, no means no हो जाता है. ठीक है, तो चूंकि चाइना ने अकेले भी अगर मना कर दिया तो वो मना हो जाता है. And that is why even if all the others agree, if one of them says no means no. That is what it says. Now the next one is, which of the following is not the part of G4? Brazil, India, China, Japan. Because in this article, the author talks about G4. Ye G7, this is not G7, it is something else. So you have to tell me which of them is not a part of G4. Guys, there is a request. Everyone, please press the like button, share this video, subscribe to our channel. सबको like button press कर दो everyone फटाफट. Yes. What is the right answer? Yes, Hariom, Debadita, Shubham, Sonal, Lakshmi, you all are right. C is the right answer. Yes, good. Riya, Muskan, Ayush, you all are right. So here in the last, actually the author is talking about it, that Mr. Jayashankar's hosting of a ministerial meeting of G4, Brazil, India, Germany and Japan holds a special significance. Okay, there's a homework. Go and find out what is the main motive of G4. मेरा homework ये है कि आप जाके पता कीजिए कि G4 का मेन मकसद क्या है, इस ग्रुप को क्यों बनाया गया. It's a very important significance and it is very important. Go and find out. ठीक है, that is what the author is talking about. Now, let's talk about, एक साइड में आर्टिकल थे, government must upgrade its thinking on privacy before digital apps control. Because recently draft telecommunication bill was put in public. So it's a draft. People, it has invited comments from the people. You can give your suggestion, etc. The draft bill actually talks about what? WhatsApp, Zoom, Netflix will also be considered as a telecommunication service and they will be regulated by this IT Act. तो ये कहा जा रहा है कि WhatsApp, Zoom, Netflix ये सब भी अब telecommunication service में आ जाएगा and all. So the author is talking about in different things, some critical articles, criticism is also there. तो आप इसको पढ़ लेना कि क्या criticism etc. Now the author is saying कि we are right now regulated by this act, Indian Telegraph Act 1885, which actually has become, you can say, quite old. बहुत पुराना कानून है जिससे हम लोग अभी डील कर रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन को. Indian Telegraph Act 1885, we are talking before independence, and we are now having so much digital technologies etc. So that is why it is very important to come up with a comprehensive data protection law. बहुत जरूरी है कि एक बहुत अच्छा सा data protection law लेके आए. And here the author is saying that recently not the highest court, तो highest court of the country is Supreme Court of India. ठीक है, सबसे ऊंची अदालत जो है वो है Supreme Court. So had recently said, means few years back, that right to privacy is a fundamental right. है ना, Supreme Court ने ये कहा है कि right to privacy एक fundamental right है. So please answer it. I want to know that right to privacy is a fundamental right under which article of the Indian Constitution? Article 14, 21, 18, 17. And please answer in which of the following judgment, which judgment of Supreme Court, name the judgment of Supreme Court in which Supreme Court said this. आपको ये बताना है कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. इसके अलावा आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी आर्टिकल के अंडर ये आता है राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट. यस, गुड, वेरी गुड. इट्स आर्टिकल 21. गुड. सृष्टि, मुस्कान, जय कसेरा, हर्षिता, देवबाद्रिता, शमिष्ठा. यस, केएस पुट्टास्वामी केस. यस, हरिओम देवबाद्रिता, राइट. इट्स केएस पुट्टास्वामी केस. गुड, वेरी गुड. Talks about right to privacy as a fundamental right. ठीक है, so B is the right answer. There's a request, everyone please press the like button, comment, share this video, subscribe to our channel everyone. Yes. One more thing is that we are organizing a CLAT mega mocks. Everyone, it's requested by everyone to please attempt this. ठीक है, from 23rd to 2nd October अगर आप देखोगे, है ना. So still you have time. 23rd September to 2nd October, we are having All India Mega Mocks. Download our BYJU'S exam prep app, go to CLAT and law section, you will get these things, है ना. So please attempt it because आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, right? So you will get to know कि how you are performing, ठीक है. So that is why it is very very important to attempt this mega mock. Okay, yes. Now let's talk about this one.
एंड दिस इज एक्चुअली ऑपेड पेज, ठीक है ना. एक्चुअली द हिंदू ने लेआउट चेंज कर दिया है, सो आई थिंक इनिशियली यू माइट हैव सम प्रॉब्लम, बट ओके, नो इशू. नाउ देयर इज एन आर्टिकल हियर ऑन द सेकंड हाफ of op-ed page. There is an important article, I could say, midday meal related food poisoning cases at 6-year peak. देखो, you understand midday meal, right? midday meal मतलब क्या होता है? जो दोपहर में गरीब बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में खाना मिलता है, right? So that's called as midday meal. Related food poisoning cases at 6-year peak, यानी पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा हो गया food poisoning से related cases. Why? You can see it here. देखो, इसमें बहुत सारे चार्ट्स उन्होंने बनाए हैं. These are the charts it has made. The chart shows the number of cases of food poisoning due to the consumption of midday meals in school between 2009 to 2022. So 2009 से 2022 के बीच इनफैक्ट यहाँ पर तो और ज्यादा हो गया था. तो इस रीजन में कम होता था, ठीक है. अब आप देखो, जैसे 2009 से इधर और आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में जनरली राइज किया है. ओके, दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर. नाउ हियर द ऑथर हैज मेड मोर मैप्स. अगर आप देखो, यहाँ पे डार्क ब्लू है, जो डार्कर ज्यादा है उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंसिडेंट हुई है. आप देख रहे हो यहाँ पे. एंड देन इन सम प्लेसेस लाइक फॉर एग्जांपल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार, 223 स्टूडेंट्स कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन एटसेट्रा एंड ऑल. यानी पेट में दर्द की शिकायत हुई थी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में 223 बच्चों में. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. देखो इसमें क्या क्या है. हाँ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर राइट्स, संजय सरकार, राइट. तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है ना, लिजर्ड पाया जाता है बहुत ज्यादा खाना में. छिपकली पाए जाने की तादाद बहुत सारे केसेस में पाएगी. किसी में रैट, किसी में कॉकरोच, एक जगह तो स्नेक भी पाएगा. अरे बाप रे, खाना में देयर वाज अ स्नेक इन द फूड. सो नो, द रीजन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइजीन. साफ सुथरा बनाया जाता हो, जहाँ पे किचन होगा, ऊपर छिपकली जा रही होगी, खाना में गिर गई, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही कुछ होता होगा. या सो दैट इज important. Why this is important? You have to understand. Because those who are from rich, they can buy and eat. जो अमीर होते हो तो खरीद के खा लेंगे, घर में बना लेंगे. जो ये गरीब बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना. एंड राइट टू फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. यस, ठीक है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, खाना जो है वो उसका बेसिक राइट है. एक इंसान अगर बेसिक खाना भी नहीं खा रहा है तो वो तो मतलब ही शी विल डाई. यस, सो इवन इफ द वन इज वेरी मच पुअर, अगर कोई बहुत गरीब भी है, स्टिल द बेसिक अमाउंट ऑफ food should be given to him or her, है ना. That is why it is very very important. Okay, yes. Now एक और text and context करके newspaper द हिंदू में एक आर्टिकल थी. I mean actually they have made small articles. तो एक है जैसे over 5,000 militants arrested in Assam, only one convicted. तो जैसे ये बता रहे हैं कि लास्ट 12 साल में 5,000 से ज्यादा मिलिटेंट्स के नाम पर अरेस्ट किए गए, सिर्फ एक को कन्विक्ट किया गया. कन्विक्ट मींस प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट, है ना. इस आर्टिकल के हिसाब से सिर्फ एक आदमी को अदालत में प्रूव किया जा चुका है कि ये मिलिटेंट है, बाकी को अभी तक प्रूव नहीं किया गया है. ओके, देन इट सेज डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव क्वाड्रुपल्ड इन पास्ट 5 years. क्वाड्रुपल्ड मतलब होता है 4 times हो जाना. तो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज इफ वी आर एक्सपोर्टिंग एनीथिंग टू सम अदर नेशन, वी आर गेटिंग बैक फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस. फिर एक और चीज है, ईरान ऑफर्स ओएनजीसी विदेश 30% स्टेक इन फरजाद बी गैस फील्ड. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज. लेट मी शो यू. हियर इज इंडिया, दिस इज ईरान. यहाँ पे फरजाद बी गैस फील्ड, राइट. यहाँ पे नेचुरल गैस होता है एक्चुअली. ईरान इज फेमस फॉर नेचुरल गैस ऑल्सो. सो ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी विदेश मीन्स द, you can say ONGC is Oil and Natural Gas Commission. It is a PSU, public sector unit of India, involved in extracting oils, etc. Right? ONGC Videsh means ONGC which works in foreign nations. ठीक है, so it's a unit of ONGC which works in foreign nation. तो ONGC विदेश को 30% स्टेक मिल गया फरजाद बी गैस फील्ड में. Okay, that is what is being discussed. Yes, then others were not that much important, but still you can read it, है ना. This was a little bit important. इसको थोड़ा सा अपना डिटेल में जाके पढ़िएगा. Why did India get ONGC विदेश 30% stake? What is the history behind this Farzad B gas field? Because it has relation with India. This Farzad B gas field has some relation with India previously also. That is why we are discussing it. Now, non-oil exports to UAE up 14% after trade deal, a surge 3% globally. देखो, here is India, this is UAE. So India's export
Non-oil export, of course, because UAE does not need oil. So we'll be exporting non-oil products to UAE, and it has increased by 14%. 14% नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स जो कि इंडिया से यूएई की तरफ जाता है वो बढ़ गया. सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस. व्हाई? बिकॉज इट इज सेइंग आफ्टर ट्रेड डील. सो व्हिच ट्रेड डील वी आर टॉकिंग अबाउट? कैन एनीवन टेल मी? India and UAE few months back signed which agreement? ICTA, CEPA, SAFTA, SAPTA. What is the right answer, guys? Everyone, please press the like button, share this video, subscribe to our channel. So which agreement we signed, which is the result of what we are seeing right now, that we have increased 14% non-oil exports to UAE? Which of the following we have signed? Everyone, please press the like button, everyone, share this video, subscribe to our channel. Yes, it's actually CEPA. B is the right answer. Hariom, Muskan, Ayush, Srishti, you all are right. Medha, Kumar, Harshita, you all are right. So we have actually, and that is what the author is talking about, that India's non-oil exports to UAE have grown between June and August. Why? Because of bilateral deal. तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, Economic Times. CEPA impact India's non-petroleum export increases, है ना, up by 14%. मतलब होता है वही rise करना. That is what is being discussed. CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Good. Muskan, Debadita, Hariom, right. Then there was one more article talking about Mukul Rohatgi declines center offer to be Attorney General of India. ठीक है. So उन्होंने मना कर दिया, केंद्र सरकार ने ऑफर दिया अटॉर्नी जनरल बनने का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. पर्सनल उन्होंने कोई रीजन नहीं बताया एक्चुअली. ठीक है. That is what it says. Now the question is, Attorney General is what post? Constitutional, statutory, neither statutory nor constitutional, none of the above. What is the right answer, guys? These types of questions are asked in ALET, है ना. ALET ने पूछते हैं इस तरह क्वेश्चन. What is the right answer? Everyone, please press the like button, share this video, subscribe to our channel. What is the right answer? Attorney General कौन सी पोस्ट कहलाती है? Anyone? Option A, B, C, D. Yes, good. Debadita, Sonal, Sojam, Nancy, Shubham, Sakshi, Riya, you all are right. It's a constitutional post. Now, since it is a constitutional post, which article? Yes, very good. Debadita Acharya has answered it. Good. So, which article of Indian Constitution talks about Attorney General of India? It's Article 76. So, C is the right answer here. यहाँ पर आंसर A होगा, question number 7 का, and question number 8 का right answer is C is the right answer. Yes, Mr. Kashyap, Kumar, Gaurav, you all are right. Article 76 talks about it. ठीक है. Now, there was an article about government lacks clear stand on curative plea in Bhopal aid case. Actually, क्या मैं short में बता देता हूँ. There is a curative petition, you understand? One is called as review petition. After review petition, there is another petition which can be filed, and that's called as curative petition. यानी कि review petition हो गया, उसके बाद एक और petition फाइल की जाती है, उसको कहते हैं curative petition. उसमें actually petition क्या है? So petition is to enhance compensation to victims. जो भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स रहे हैं उनको और ज्यादा कंपनसेशन देने के लिए एक पेटिशन डाला गया है. ओके, यस, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. आई होप यू आर अवेयर. वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड ऑन 2 to 3 December 1984, वेयर व्हाट हैपेंड वाज कि यूनियन कार्बाइड की प्लांट में भोपाल मध्य प्रदेश में कैन से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस गॉट लीक्ड, किल्ड मेनी पीपल एंड मेनी पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड एटसेट्रा. तो उसी के लिए सो द गवर्नमेंट लैक्स क्लियर स्टैंड. यानी अभी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है. अनश्योर इफ द सेंटर वुड वांट टू परस्यू और नॉट. यानी अभी भी सेंटर गवर्नमेंट का पूरा क्रिस्टल क्लियर कोई प्लान नहीं बताया कि उनका क्या ओपिनियन है. ठीक है. सो दैट वाज इन द आर्टिकल. लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर. देन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पिक्स नेशनल कांग्रेस डेलीगेट्स. देखो एक्चुअली क्या है, सितंबर में there's a meeting which is going to happen of Chinese Communist Party in which 2296 delegates will attend. ठीक है, 2296 delegates attend करेंगे. And what are the things? The week-long exercise is Congress is likely to mark the start of an unprecedented third 5-year term for Mr. Xi. Will pass several amendments etc. and all. तो basically समझ दो कि Mr. Xi Jinping's power might increase in future. ठीक है, हो सकता है कि इनकी पावर और बढ़ जाए, which will be similar to Mao Zedong and Deng Xiaoping and all. Now, one more thing I wanted to say, there were some rumors actually coming in. There was some news कि Xi Jinping has got house arrested, military coup in China or something like this. But till now it has not been proven. अभी ऐसा कोई proof नहीं हुआ है.
there were things coming in social media. So unless and until it is proven, I am not going to discuss about it. ठीक है, तो अभी ये चीज पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि क्या सही में हाउस अरेस्ट हुआ है, मिलिट्री को हुआ है, कि ये सिर्फ न्यूज है या र्यूमर है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट बिकॉज इट्स स्टिल देयर इज अ वेग, इट्स नॉट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. ओके, सो अभी तक आप इसको इसी तरह देखना. लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द टाइम, वक्त बताएगा. एक देखो 16 अक्टूबर का है ना मीटिंग, टिल दैट डे विल गेट टू नो, बिकॉज एग्जाम आपको उसके बाद ही है, राइट? ऑन 18 दिसंबर यू हैव एग्जाम. सो बाय दैट टाइम थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर. तो अभी इतना टेंशन नहीं लेने गए कि मिलिट्री को हुआ कि नहीं हुआ, गूगल पे सर्च करें, फाइंड आउट करें. सो लेट्स सी, वेट, दैट इज व्हाट आई विल बी टेलिंग यू. Yes, I have already told you, please download the BYJU'S exam prep app. We are having all India mega mock. Please do join it. इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, that will be very much beneficial for you. ठीक है ना? From 23rd September to 2nd October ये चल रहा है. Okay, follow us on our Instagram, follow us on YouTube. Please subscribe to the YouTube channel also. And you can follow us on Facebook, Telegram, download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Please press the like button, share this video and subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for watching.